Krishna, good evening. Welcome to our Ramayana class. Today being Ekadashi, we is having a special Ramayana class today. So we have finished the third chapter, the third Sarga of the Balkand, and now we are going for the fourth Kand of the Balkand. So fourth Sarga of the Balkand. So how many of you remember the question I had asked last week? I had asked a question. Does anyone remember the question? You said that is that Uttarakhand the part of Ramayana or not? Yes, very nice. No answer. So, how many of you all got the answer for that? I'm very sure none must have even remembered the question also asked. So let's start with the fourth chapter. Prapta Rajasya Ramasya Valmiki Bhagavan Rishihi Chakra Charitam Krishnam Vicharat Padam Vichitra Padam Arthavat. So after Lord Rama regained his kingdom, great sage Valmiki composed the legend Ramayana, which was full of meaning and beautiful words. Arthavat means meaningful, and beautiful words means words which explain things very nicely. So let's understand this little more detail. After Lord Rama regained the kingdom, यानी कि कब की बात है ये? When Rama had come back from exile, from his vanavas. After killing Ravan, Rama is coming back with Sita, Lakshmana, and the other monkeys. And he has regained his kingdom. Sage Valmiki composed the legendary Ramayana. इसका मतलब क्या है? रामायण कब लिखा गया? जब रामचंद्र जी वापस आ गए। बचपन का पूरा लीला हो चुका था, यहां तक कि उनका वध हो चुका। और इसका मतलब क्या है? युद्ध कांड खत्म हो चुका है, राइट? युद्ध कांड में खत्म होने के बाद भगवान वापस आ रहे हैं। Because the question which I asked, these two verses, verse number 1 and 2, answers everything. And it is after that he has composed with full of meaning and words. तो यहाँ पे कोई भी बोलेगा नहीं प्रभु जी, तो युद्धकांड के बाद उन्होंने कंपोज कर दिया, तो उत्तरकांड तो हो ही नहीं सकता। बस उत्तरकांड में ही सीता मैया को छोड़ देते हैं रामचंद्र जी एंड ऑल। But please understand, the Ramayana starts at what point? At what point the Ramayana started? Remember, first verse of the Ramayana. इसको याद है? Come on, fast. Yes. बोलो। जब भी वाल्मीकि ऋषि अचरज में, यानी उनको थोड़ा कंफ्यूजन में थे, जब भी सीता माता उनके आश्रम में तो आचार्यगण क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या वो वाकई में राम भगवान है जिन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ भेज दिया आश्रम में? और अब ये इस चैप्टर में आगे आएगा, लव और कुश जाके उनके पैर पड़ रहे हैं, यानी कि कब तक हुआ है? सिर्फ युद्ध कांड नहीं, भगवान राम सीता मैया को वन में भी भेज देते। पहला चीज तो धोबी का बात सुन के नहीं है ये, दिस इज नॉट देयर इन वाल्मीकि रामायण, इट इज देयर इन अदर रामायण्स। यहाँ पे क्लियर कट दिखा गया कि भाई स्पाई बॉट द न्यूज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पाइस न्यूज रामचंद्र जी सेंट सीता मैया टू द फॉरेस्ट. So the most important thing we have to understand here is रामचंद्र जी जब सीता मैया को वन में भेज दिए थे, वाल्मीकि तभी सोचने लगे जिनको मैं भगवान सोच रहा था, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को वन में क्यों भेजा? Why did he send her to the forest? And when that type of confusion and was the despair, he was sitting and not able to understand. It's not clear to him. And whenever a person who doesn't have his knowledge very clear, who can clear his doubts? None other than the spiritual master. And who was the spiritual master of Valmiki? Narad Muni. So Narad Muni immediately comes and he tells him, no, he is the one who is Dridhato, Satyavakyo,
and all that 16 qualities which I mentioned, all qualities. Allah ek hi aadmi hai, and that is none other than the Lord. And then he told the entire Ramayana to him. And after that, immediately Brahmaji came and told him, see, already Valmiki has told, and I'm giving you the yogic power by which you will now write the. So he composed the Ramayana. So at that point, he started composing. So the next verse clears the doubt fully. चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग सतान पंच षट कांडानि तथा उत्तरम. Clear cut it is mentioned. Sage Valmiki composed Ramayana in 24,000 shlokas. Chaturvimshat Sahasrani. Chaturvimshat means 24. Sahasrani means 1,000. 24,000 shlokam. Uktvan, he said, he has mentioned. Rishi Tatha, also. Sarga. How many sargas are there? Satan Pancha. 105. That is 500 sargas. So total 500 sargas are there in Ramayana. In how many? 6 kand, Sat kandani, Tatha Uttaram, Tatha Uttarkand. So Uttarkand is an official part of Ramayana. So don't try to exclude that. Many people क्या बोलते हैं? Uttarkand is not the part. क्यों? कारण क्या देते हैं? Because युद्ध कांड के बाद फलश्रुति दिया गया है, श्रुति फल दिया गया है, ये सुनने का क्या फल है, रामायण पढ़ने का क्या फल है. Usually this is given at the end of the chapter. So it is given there. That is why people consider. So please understand. Now here the big question, $1 million question raises. How can one calculate the number of shlokas? I mean, if you go to count, let's say the Bhagavad Gita, 24,000 to bahut bada hai. Let's take the Bhagavad Gita, which is, how many verses are there in Bhagavad Gita? 700. 700. Very good. आपने गिना प्रभु जी? प्रभु जी फर्स्ट What you said is correct, 700 shlokas. But do you understand how do you calculate the shlokas? प्रभु जी फर्स्ट चैप्टर में 47 है, सेकंड चैप्टर में 72 है, Prabhu, 12th chapter giving statistics. One minute. Some shlokas, how do you calculate the number of shlokas? The calculation is different. What you are giving is like the AI generated answer. Each chapter is having this many shlokas. Shastra says, अगर आप गिन के देखोगे ना, 700 नहीं आएगा. रामायण भी आप गिनोगे ना, 24,000 नहीं आएगा. महाभारत भी गिनोगे ना, if you go to count verse wise. Why? Because वर्ड्स का कैलकुलेशन कैसा है, 4 पार्ट्स में होना चाहिए. यहाँ पे आप देखते हो 7 chapter, one of the verses, I think in the 12th chapter is only 1 line, Bhagavad Gita. Why? That is why Acharyas say there is a method of calculating shlokas. What is the method? Take the number of words in the entire book, or rather in the entire grantha, and divide it by 32. वो number जो आता है, that is the number of shlokas. This is the secret formula of calculating the shlokas. No, every line में है ना, कितना फुट है, कितना इंचेस है. The carpenter also has his own formula of calculating things. वैसे ही है यहाँ पे. Understanding calculation of shlokas means the total number of shlokas are added together, divided by 32. जितना number of what do you say, number आता है उससे divide करने के बाद, उतना number of shlokas है. On that basis, Bhagavad Gita has got 700. If you calculate Valmiki Ramayana 24,000, and on the basis of sing. Like for example, Ramayana, every last 2 words, 1 or 2 words of the chapter has more than 2 lines. It has got 4 lines, 5 lines. It has got. The reason is, that is why this is a calculation given for calculating the number of shlokas. So
So these are the two things, and the total number of shlokas, including the shlokas of Uttarakhand का श्लोकास भी अगर ऐड करते हैं, it comes to 24,253. This is the actual total count of the shlokas in the Valmiki Ramayana. 24,253. On that basis, जब तक हम उत्तराखंड को उसमें ऐड नहीं करेंगे, वाल्मीकि रामायण का काउंट जो बताया गया है 24,000 will not come. So Uttarakhand is an official part of Valmiki Ramayana. Okay, let's go to the verse number 3. The great scholar sage Valmiki, after finishing his composition with events that had already happened in the past and events that would happen later, third confirmation. जो इवेंट्स हो गए थे बालकांड में, किष्किंधा कांड में, अयोध्या कांड में, जो भी सब हो गए थे, सब तो मेंशन किया ही है. And in his composition, after finishing his composition with events that had already happened in the past and events that would happen later, was thinking how to spread the composition. This is a big challenge, you know that. Writing the book is not a big challenge. How to distribute the book is a bigger challenge. Because people have got time, money, energy for everything nonsense in this world, but not for spiritual things. They don't understand that that is the essence which we have to carry at the end of our life. So great scholar Valmiki was thinking, ठीक है, मैंने तो लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है, होने वाला चीज भी लिख दिया है, अब किसको दूं, किसका थ्रू प्रचार करूं, किसका थ्रू should I spread this composition? So sage Valmiki was looking out for a personality who were capable and potent to spread the message of Ramayana. So यहाँ पे the next verse clearly states, when the meditative sage Valmiki was thus thinking at that time, the twins Kusha and Lava came and touched the feet of the sage. यानी कि कब लिखे जा रहे हैं, कब सोच रहे हैं वाल्मीकि जी करने के लिए? ऑलरेडी लव और कुश पैदा हो चुके हैं, बड़े भी हो चुके हैं आश्रम में. ऐसा नहीं कि जस्ट बॉर्न किड्स नहीं है, बड़े हैं, और उन्होंने आके चरण छुए. Touched the sage's feet. Sage Valmiki saw the two celebrated prince Kusha and Lava, who were the residents of his hermitage. अब उसके निवासी थे ना, hermitage के निवासी थे. And knowers of virtue, धार्मिक थे. They were gifted with a sweet voice. बड़ा मधुर आवाज था. Sage Valmiki saw that the two highly intelligent brothers who were well versed in the Vedas, he gave that Ramayana which he had composed to strengthen the Vedas to those two boys. Now this is a very, very important shloka which is going to give us the purpose of writing the Ramayana. Veda Upabhraman, strengthen the Vedas. Now, how do we understand strengthen the Vedas? Vedas तो क्या कमजोर हैं, उनको ताकत बढ़ाने के लिए वो कहते हैं ना, वो ऐड आता है ना, दूध की शक्ति बढ़ाओ, कुछ तो मिलाओ और वो दूध की शक्ति बढ़ाओ. ऐसा यहाँ पे कुछ मिला के वेदों का ताकत बढ़ाएंगे क्या? It's very important. We have to understand this very scrutinizingly. What are the two itihasas, Mahabharata and Ramayana? Why did it happen, and why were they written, and why they are more important or as good as they are called as Pancham Ved, पांचवा वेद कहा गया है. चार वेद तो है, कौन सा चार वेद, कौन सा है? चलो लेट मी सी लोगों का जीके कितना है. ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद and यजुर्वेद. Yes, very good. So there was earlier only one Ved. Ved Vyas then broke it up into 4 Vedas. But that is also just because we were not smart enough to read all the Vedas in one stroke. And today's date also, no one can read the Vedas perfectly. All right.
और वेदा पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्विजिशंस क्या क्या है? व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर रीडिंग द वेदास? Come on, tell me, what are the prerequisites? क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वेद पढ़ने के लिए? अरे पहले संस्कृत मालूम होना चाहिए. You should be an expert in Sanskrit. Second, you need to be a Brahmana. Vedas cannot be read by anyone else. Only a Brahmana can read. This is a rule put up in the Shastra. So now God himself thought, Acharyas thought, how will the people understand the Ved? Because Ved itself, पहला तो पढ़ने पर restriction है. ऊपर से हर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है और ऊपर से वो भाषा संस्कृत आना चाहिए. तीसरा, चलो भाषा भी आ गया, मैं ब्राह्मण भी हूं, समझेगा कैसे? There are so many intricacies in the Veda. छोटे छोटे सूक्ष्म, very minute things हैं to understand in the Vedas. So what is to be done? So they said, Lord said, let me enact a story, a Leela, by which all the Vedas or the teachings of the Vedas will come under it, and that can be made easy for the people to understand. Simple. Like, पिता का वाक्य सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? हम बोलेंगे हाँ, और वही पिताजी बोलेगा घर के बाहर निकल जाओ. Just imagine today's date. पति पत्नी दोनों आराम से बैठे हैं and suddenly पिताजी आके बुलाते हैं, जैसे रामायण में हुआ. राम को अगला दिन घर देने वाले थे, किंगडम देने वाले थे, राज्य देने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था. उसी दिन सुबह बुलाया और बोल दिया कि भाई कैकेयी ने बोला आपको वन में जाना है. रामचंद्र जी हैप्पीली वेंट. आज के जमाने में होगा? And not only he went, Sita also quietly went with him. She didn't question. और आजकल अभी रुको, मैं पापा को फोन करती हूँ, अभी वकील को बुलाती हूँ, I'll fight out. How do you think? For what mistake? Because Dashrath Maharaj himself says in the Ayodhya Kand, our Lakshmana says, for what mistake did Ramchandra ji do that you exiled him? रामचंद्र जी ने क्या गलती किया था उसके लिए उनको वन में भेज दिया? कोई गलती करता है तो वन में भेज सकते हैं. पनिशमेंट इज गिवन फॉर वन हु डज अ क्राइम. उन्होंने क्या पाप किया? कुछ भी नहीं. तुमने बूंद दिया, तुमने आशीर्वाद दिया या तुमने वर दिया कैकेयी को, बलि चकड़ चढ़ा रामचंद्र. फॉर व्हाट? इट इज नॉट जस्टिफाइड. इट्स ट्रू. So what does this Ramayana teach us? Every stage, every turn of the story, it teaches us nothing but the Vedas. The rules and injunctions of the Vedas. क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए. Ramchandra ji, when his father said, you have to go to the forest, he went. His brother came and said, नहीं नहीं आजा, मैं रहता हूँ आपकी जगह पे. He said, no, 14 years I will be in the forest because I have given a word. So how to stick to one's word? आजकल आदमी इंसान अपने जवान पे टिकता क्यों? कैसा? अगर आप गलत कर्म करते हो तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा. श्रवण कुमार को दशरथ महाराज ने गलती से मारा था, not by intention. He was a young boy. He was moving to the forest, and the night he was practicing Shabda Vedi Baan. Just by listening to the sound, you should hit the target. It's also a kala. It's an art. It's a skill. So he was sitting in one place near the river, and suddenly he heard some bubbling noise. इधर तो आवाज आ रहा था, बुड़ुक 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 बुड़ुक. उसको लगा, ओ हाथी आया है पानी पीने. Immediately took the arrow without seeing, just in the direction from where the sound came. He fired the arrow, and there a boy came. अरे मुझे कौन मार दिया भाई? He came running. He went running over there, and he saw, oh my God, what has happened? I have killed a Brahmana for nothing. He was none other than Shravana Kumar, who was carrying his blind parents. हमने सुना है आजकल बच्चे लोग, they don't carry blind parents. They leave them in the क्या वृद्धाश्रम.
So why Ramayana is necessary for the society today? Why is Mahabharata necessary for the society today? Because English movies and English stories like Harry Potter will teach you nice fantasies. Nice fantasies. But virtue, righteousness, dharma, you will learn only through Ramayana and the Mahabharata. इसके लिए हमको रामायण और महाभारत पढ़ना है. एंटरटेनमेंट के लिए तो बाकी सब छोटी मोटी किताबें सब है, और रामायण, महाभारत, भागवतम, ये सब हम क्या क्यों पढ़ना चाहते हैं? भागवतम से भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में पता चलता है. रामायण और महाभारत कैसे एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह करना है, हाउ टू लिव लाइफ इन दिस प्लैनेट, इज गिवन बाय दीज बुक्स. Immediately, Shravan Kumar said, okay, I'm dying, remove the arrow. The minute the arrow he removed, he died. He said, give this water to my parents, they are very thirsty. They are sitting expecting me to come back. At least you go and feed them the water. Immediately Dasharatha Maharaj took that pot filled of water and went to his parents at the said place where he was sitting. और वहां जाके उनको दिया. He asked, अरे हमारा बेटा नहीं आया? He told everything, that I killed your son unknowingly. They both cried pitiably. They said, who will take care of us now? It was the only support for us. You killed him. Take us to the sun. And they entered the same fire which was lit for the sun. But before dying, what did they curse him? You will also suffer the same agony of separation and die. The way we are crying for our son, you will also cry for your son and you will die. So what is this? Karma reactions. एक कर्म किया उसने, और उस तभी जवान था, पुत्र नहीं थे. And Dasharatha Maharaj says, I happily accepted that curse. क्यों? अरे इसी बहाने कम से कम मुझे पुत्र तो होंगे, और श्राप पूरा होने के लिए तो कम से कम मुझे पुत्र होंगे. कि अभी तो मेरे को पुत्र ही नहीं है, चलो एक अच्छा श्राप दिया. Least did he understand that what is going to happen later on. So one must understand that this small incident, and he laments when Ramchandra ji goes, he cries to Kaushalya, Kaushalya, that time I laughed at that Brahmana who cursed me, and I said I was happy to take the curse. At least ये curse पूरा करने के लिए तो मुझे पुत्र होंगे. But आज मुझे वो वेदना, that sorrow, that grief, that anguish and the pain I am undergoing now. That anguish and pain was too much for him to bear. He left his body. So what does this teach us? The law of karma. As you sow, so you reap. You kill someone's son and separate him from the, and the parents die in anguish for the son, you will also have to suffer. ये शायद वेदों में सिखा के हमको समझ में नहीं आता है, और ये प्रैक्टिकली स्टोरी में हम सब पढ़ते हैं तब समझ. Wali's pact with Ravana, association with bad people. बार बार कहता है गलत लोगों के साथ संग मत करना. वेद कहता है बार बार गलत लोगों के साथ संग मत करना, फिर भी समझ में नहीं आता. रामचंद्र जी ने दिखाया, जो दो वाली का कुछ गलती नहीं था. वाली का गलती यही था, उसने अपने छोटे भाई की बीवी को अपना बीवी बना लिया. Then he was killed because he was in association with Ravana. He had signed a pact with Ravana. But tell me one thing, if that was the case, that principle was wrong. Same principle, same mistake even Sugriva did. Sugriva then made Tara, the wife of Vali, sit in his wife's place. That is on his left side, Vama Bhaga. It is said as Vama Bhaga. Vama Bhaga means left hand side. तभी सुग्रीव को क्यों नहीं मारा? काम करवा के लेने का था इसके लिए. Many people make a mistake of understanding this. He never married. He respected, because Tara knew how great Ram was and gave her a respectable position. He didn't marry her to enjoy. So you have to understand. Same Vibhishan also did. He gave Mandodari an elevated position.
as good as his wife, because she was in dharma, she was following. So now then injunctions of the Vedas also teach us about the injunctions of bhakti. भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है? अगर आप गुहा जैसे भक्ति करोगे, गुहा का भक्ति कैसा था? सीधा डायरेक्टली टू गॉड, नॉट टू गुरु। हो जाएगा थोड़ा बहुत तो दोस्ती यारी दोस्ती हो जाएगी भगवान के साथ, पर फल नहीं मिलेगा। उसको ढूंढ के आना पड़ा, सिंगबेरपुर में जाके उसको ढूंढ के आना पड़ा, मगर रामचंद्र जी स्वयं ढूंढते ढूंढते गए, शबरी को ढूंढते ढूंढते। क्यों? तो शबरी had taken a guru, and after taking the shelter of a guru, serving the guru and his associates the sadhus, she was waiting, chanting his name. तो भगवान का नाम जपना कितना महत्वपूर्ण है, इससे हमको पता चला। राइट और रॉन्ग? दिस इज, ये इससे पता चलता है कि भगवान का नाम जपना है हमको, ये भी हमको रामायण सिखा। लंका में रहते हुए भी, असुरों के बीच में रहते हुए भी विभीषण भगवान का नाम जप रहा है। कोई अगर पूछे प्रभु शरणागति कैसे करना है, किस वक्त करना है, किस दिन करना है, अच्छा मुहूर्त देके करना है, एकादशी के दिन करना है या त्योहार के दिन करना है? रात को 12 बजे विभीषण आया था शरणागति करने के, वो बेचारा असुरों के साथ, और उसको पूछा गया तो कौन है, तो उसने क्या बोला? मैं रावण का भाई। सच बोला, झूठ नहीं बोला, कपट नहीं किया उसने। He was frank and open with Lord. So what does this mean? Lord likes straightforward, clean people. Secondly, surrender can be done at any time by anyone who desires to surrender. But I had already told you all the story of why Ramchandra ji killed Vali hidingly. If you do certain activity, this is what again a part of the Vedas is being explained here. You do certain activity by which you lose the right to surrender also. Ramchandra ji said, कहीं आके इसने मेरा शरणागति ले लिया, मेरे पैर आके गिर गया, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो इसको वध करना ही करना है, ये नहीं तो रावण का वध नहीं होगा। रावण का दोस्त है, रावण के साथ दोस्ती बनाया इसने। So he hid in the bushes, I mean behind the cave, and killed Vali. People generally come and say, नहीं नहीं प्रभु जी आपको मालूम नहीं है, वाली के पास एक बून था, वर था, वो जो भी जिससे फाइट करेगा उसका आधा शक्ति उसके पास आ जाएगा, उसके लिए वो छुप के मार रहे थे। भगवान को छुपने की जरूरत नहीं है। Lord need not fear from anyone because Lord is very very पूर्ण। श्लोक है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण थे, अपूर्ण से भगवान पूर्ण है और रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे, कभी इनकम्प्लीट नहीं रहेंगे, हम इनकम्प्लीट। और भगवान, और श्लोक क्या कहते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से जो आता है वो भी पूर्ण है, और उसके बाद निकलने के बाद जो बचता है वो भी पूर्ण है। ये जनरल मैथ्स जो है ना, यहाँ पे लागू नहीं। जनरल मैथ्स क्या बोलते हैं? 10 में से अगर 10 निकाल दो, पूर्ण मतलब 10 पूर्ण है, पूर्ण में से जो निकलता वो भी पूर्ण है, मतलब 10 में से 10 निकाल दो तो 10 बचेगा। मैथ्स टीचर बोलेगा घर जाओ। और भगवान का साइंस क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं पूर्ण हूं, मेरे मुझसे जो निकल रहा है वो भी पूर्ण है, और मेरे पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचता है अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। तो रामचंद्र जी को छुप के वाली को मारने की जरूरत नहीं थी, कभी उन्होंने छुप के इसके लिए नहीं मारा क्योंकि वाली मेरा आधा ताकत ले लेगा, और आधा लेगा, इन्फिनिटी का आधा क्या हो सकता है? इन्फिनिटी, और फिर बचेगा क्या? इन्फिनिटी। He did only because he wanted to teach the world a lesson of the Vedas, which says one should always be
away from bad company, bad people, then you lose the right even to surrender to God. मगर विभीषण को रात को 12 बजे surrender. So if you take every leela of Ramchandra ji, the entire Ramayana, this was nothing but the Vedas in the form of story. Same applies to Mahabharata also. Mahabharata also teaches you everything, the rules. But अंतर क्या है, महाभारत का एक अंग क्या है, भगवत गीता है. भीष्म पर्व में आता है ना, जब भीष्म पितामह 11वें दिन 10वें दिन युद्ध में गिर जाते हैं, तब धृतराष्ट्र पूछता है, अरे भाई क्या गड़बड़ है, देख भाई क्या हुआ, मेरे को पहले दिन से बता. That is why the first question is there, na? Dharma kshetre kurukshetre samveta yudhsava mamaka pandavascheva kim akruvas Sanjaya. And at that time, Sanjaya starts saying the conversation between Krishna and Arjuna. And Arjuna is also confused, and Krishna clears the confusion. First stress management lecture was that, okay, you know that? Bhagavad Gita is the first stress management lecture. उसके बाद अभी जो भी हो रहा है वो अभी हो रहा है, बाद में हो रहा है. So the point is, the entire Vedas, the entire Itihasa, both the Ramayana and the Mahabharata, only to make the Sanskrit hard written Vedas, which are meant only for the Brahmanas, to be made easy for the common man. रामायण कोई भी पढ़ सकता है, रामायण पे कोई रोक नहीं है, महाभारत पे भी कोई रोक नहीं है, आपको ब्राह्मण ही होना चाहिए, आप ये होना चाहिए, कोई भी पढ़ सकता है. इसके लिए हम लोगों ने उसको इंग्लिश और हिंदी में कर दिया है. वह अभी कॉमन मैन संस्कृत नहीं पढ़े रामायण, तो एटलीस्ट इंग्लिश हिंदी में पढ़े. सो व्हाट इज द पर्पस? सेम वेदास, सेम वैदिक प्रिंसिपल्स, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल. Everything is taught in the Ramayana and Mahabharata. The entire निचोड़, जो वेदों का निचोड़ है, वेद बहुत बड़े हैं. अगर एक व्यक्ति, मतलब एक common man who is going to office or going to work, he can never read the Vedas. It's huge. ब्राह्मणों की पूरी आयु निकल जाती है वेद पढ़ते पढ़ते, फिर भी पूरा नहीं होता, उसका पूरा नहीं होता. क्यों? Because Ved is vast, it's never ending. But Ramayana, at least in 24,000 shlokas, it is getting over. At least in 1 lakh shlokas, the Mahabharata is getting over. Lakhs and lakhs of shlokas पढ़ने से अच्छा ये पढ़ना अच्छा है, and उसका भी with the translation and all, you get the understanding very fast. So fortifying the Vedas was the main purpose of Ramayana getting composed by वाल्मीकि जी. वाल्मीकि जी को क्यों बोला था ब्रह्मा जी ने, भाई नहीं तो मेरे आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी तो वेद पढ़ नहीं पाएंगे. जिसको जो ब्राह्मण नहीं है, जो संस्कृत नहीं जानता है, वो क्या करेगा, वेद तो समझ ही नहीं पाएगा. सरल, स्टोरी फॉर्मेट. यू ऑलमोस्ट हर्ड ऑफ पंचतंत्र, सुना है ना सब लोगों ने पंचतंत्र के बारे में. व्हाट इज पंचतंत्र? सेम प्रिंसिपल्स बट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. क्यों? कहानी के स्वरूप में जल्दी से आपके दिमाग में जाएगा. I still remember, honestly speaking, when I was very, very new, just hardly but a year when I had entered into this process of spirituality. Once I was in Chowpatty temple watching the drama, and they had made a very beautiful presentation of a drama of Gopal Bhatta Goswami, and how Radha Raman deities came. I sat and I watched the entire drama, and believe it or not, till today that story, that scenes is embedded in my mind. Why? The same story I have read a number of times, but when you see it practical happen in front of you, that is why आपने कई बार देखा होगा रामायण की रामलीला सब जगह होती रहती है साल में. Everywhere, especially in north, you see रामलीला is enacted. Why? Because कुछ और भी बुद्धू लोग हैं जो पढ़ नहीं पाएंगे, जो पढ़ के समझ में नहीं पाएंगे, उनके लिए enact किया जाता है. उनके लिए it is
as a drama or a picture, it is shown so that they will understand what is going. So this is how Vedas, to be fortified, were written by Valmiki ji. The Ramayana was written. Damini, can you please read the purport explanation for that? Yes, Prabhuji. Prabhuji, this 6 to us, right? Yeah, that's verse number 6. Sage Valmiki was contemplating on whom to give the Ramayana composed by him for propagating it. He knew that Kusha and Lava, the two powerful children of Lord Ram, were the right candidates. They had the potency and the intellect to absorb and recite it in the sweet voice. The purpose of writing the Ramayana was to fortify the Vedas. The Vedas are so vast and immense that even an entire lifespan of a human being would be less to obtain the essence of it. Also, there are lots of prerequisites for one to read the Vedas. For example, one must be a Brahmana to read the Vedas, one should be well versed in Sanskrit, and so on. So, for the benefit of people at large, Lord Brahma came in the form of sage Valmiki and composed the entire Ramayana, which is much smaller than the Vedas. The Ramayana gives the reader the essence of the Vedas in the form of a story. As said by the Acharyas, sage Valmiki himself later incarnated as Tulsidas to further simplify the Ramayana as Ramcharitmanas in the local Awadhi language, and thus made it easy for every common man to read and assimilate it. Even those who were not qualified or did not know Sanskrit could also read it. That is the best part of Ramcharitmanas. You see, entire North, it was famous for Ramcharitmanas more than Valmiki Ramayana. Reason is, Valmiki Ramayana was in English. I'm sorry, in Sanskrit, and reading in Sanskrit was a tough job for the common man. तो इसलिए तुलसीदास जी ने क्या किया, अवधि में लिख दिया. अवधि में लिख दिया तो benefit क्या हुआ? Awadhi was a local language of the North Indians, so they could read, and that is how. Similarly, in South, Kamba Ramayana is very famous. Kamban wrote the Ramayana in Tamil language. All states, entire India, there are many versions of Ramayana written in the local languages. And the purpose of writing in the local languages was to make it easier for the common man to read and assimilate it. But the tragedy is the common man doesn't want to read it. Only attending lectures will not do. You will have to open the book and read. It's an important part of it. Take one more verse and then we'll close today. Yes. Please the next Sage verse. Valmiki, Sage Valmiki, after observing sacred vows, composed the entire poem of Ramayana, which comprises the legend of Sita, the killing of Ravana, and so on. Yeah, please read the explanation also. Yeah. Acharyas say that Ramayana is Sita Charitam, although it mentions the entire life history of Lord Rama and Sita Mata. Lord Rama heard this entire composition, which was sung by Kusha and Lava. Since Lord Rama enjoyed this recitation from the two boys, it means that the Lord was himself relishing the story of Sita Mata in the Ramayana. So please understand, this is very important. Kavyam Ramayanam Krishnam Sita Charitamrita Mahat. The line very clear. The shloka clearly says Kavyam. Kavyam means the poem. Ramayanam, the Ramayanam poem. Krishna matlab entirely, completely. Sitaya's Charitram. एंड तक सीता का चरित्र चल रहा है, मालूम आपको? आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, रामचंद्र जी का जन्म हुआ एंड वो गए, ठीक है, बट इफ यू सी द मेन हीरो ऑफ द होल मूवी इज नॉट रामा, इट इज सीता. सो काव्यम सॉरी कृष्णम काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायस चरित्रम महत्. So killing of Ravana and other things were composed. But why it is called as Sita Charitra? Because Ramchandra ji heard the Ramayana. Sita heard the Ramayana. कहाँ पे सुना था? Anyone remembers? Sita also heard a part of the Ramayana. प्रभु जी हनुमान जी सुनाया ना वो. हनुमान जी ने सुंदरकांड में सुनाया, but complete रामायण किसने सुना? युद्ध कांड तक का और सीता मैया को वनवास भेजने तक का रामचंद्र जी ने सुना लवर कुश के मुंह से, क्योंकि वाल्मीकि जी ने पूरा उसको कंपोज कर.
So that was the reason why this is called as Sita Charitram. And after composing the Sage Valmiki, after observing sacred vows, composed this entire poem of Ramayana. Means what? He has performed austerities. उन्होंने तपस्या करके इसको लिखा, ना के भोग कर, आराम से, बहुत तकलीफ तपस्या करके लिखा। इसके लिए जब भी आप कोई तपस्या करके भक्ति का कार्य करते हो तो हमेशा वो महान कार्य। एंड दैट इज व्हाई हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना एक श्लोक बहुत अच्छा, this is the phala of the service given by Valmiki ji. Says the shloka says very beautifully. I'll read out the shloka for you. Yavastayati giriya Saritasya mahitale tavat Ramayana katha lokeshu pracharishyasi. As long as mountains and rivers on the earth remain, so long will the story of Ramayana spread in the world. ये किसने बोला? ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। वो डर गए थे ब्रह्मा जी, मैं लिखूंगा और रामचंद्र जी ने वो कार्य नहीं किया तो डोंट वरी, तू जो करेगा वो करेंगे। और वो आपका ये काव्य जो है वो कैसा रहेगा? यावत स्थायति गिरिया, एज लॉन्ग एज माउंटेन्स, स्थायति गिरिया, गिरिया मतलब माउंटेन्स, जब तक इस धरती पे माउंटेन, सरिता, सरिता मतलब रिवर, महीतले इस धरती पे रहेंगे, मतलब पेड़ और नदियां जब तक बहेगी इस धरती पे, मतलब जीवन जब तक रहेगा इस धरती पे, सो लॉन्ग द स्टोरी ऑफ रामायण विल स्प्रेड, उस तब तक रामायण की कथा गाई जाएगी। इतने आक्रमणी आए यहाँ पे, मुगल आए, then Britishers came, so many invaders came, Alexander आया, सब आया, फिर भी रामायण टिका है। रामायण आज भी है और आगे भी रहे। अधर्म तभी भी था जब रामायण हो रहा था, रामचंद्र जी लीला कर रहे थे, तभी भी तो अधर्म था। क्या धर्म नहीं था तभी? जब महाभारत हुआ था, युद्ध ही किसके लिए हुआ था? अधर्म को मारने के लिए। So at no point, at no time will there be a situation where only dharma will be there, adharma will not be there. Adharma will be there along with dharma, and dharma will be there along with adharma. हाँ, ये बात अलग है, कभी कभी अधर्म ज्यादा होगा, कभी कभी धर्म ऊपर रहेगा। ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं कभी कभी सत्वगुण को ऊपर करता हूँ, दैट इज धर्म को ऊपर करता हूँ, कभी रजो को ऊपर करता हूँ और कभी तमो को, अधर्म को ऊपर करता हूँ। आई बैलेंस, तभी दुनिया चलती। तो याद रखना, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी ग्रंथ हो, वेद हो, ये सब रहेंगे एंड हमको चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दीज ग्रंथास, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। वी हैव टू गेट फोकस्ड टुवर्ड्स spiritual activities. We have to focus on reading the scriptures. If we don't read, we are losing the knowledge, and coming down the line, down the generations, younger generations will also lose their interest or their understanding on the Shastra. Aaj 80% of our parents, those who are having young children, they are not able to teach the young children, their own children, tell stories, proper stories about Ramayana and Mahabharata. That is why so many TV serials are running, where the story is only 10% true and 90% is all concocted, नकली स्टोरी। बट उसी को सुनते हैं, क्यों? क्या करें, मजबूरी है, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है। काम के बारे में ज्ञान है, जो भी आपका, जो भी फील्ड है, जो भी आप लाइन में काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका पूरा ज्ञान है, बट यू आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ our Shastra, which is our basic Mool Tattva. So I humbly request all those who are watching and listening, and tell their friends and relatives also, please involve yourself equally in spiritual activities as much as you involve in material. Okay, with this, I would like to close today's session.